How are you all doing today? Great. Okay. I am Spurti Sahare. मैं नागपुर से हूँ and I stay in Pune now. And recently I have written a book on MS Dhoni. The name of the book is Think and Win Like Dhoni. Now, most of the people ask me, Dhoni क्यों select किया? The reason is, I believe that if MS Dhoni from a very small town can come and dominate in the field of cricket, why can't I do it? And I wanted to see it कि ये MS Dhoni सोचता कैसे है, डिसीजंस कैसे लेता है, प्रेशर में क्या सोचता है, कैसे अपने आप को काम रखता है. तो how many of you want to learn this today? We have limited time, guys. How many of you? Okay. I hope before that, I want to ask you one question. How many of you want to achieve something extraordinary in your lives? Can I have hands, please? Extraordinary. I have learned कि इंसान दो चीज़ों के कारण extraordinary चीज़ें नहीं कर पाता. Number one is fear. अभी सबको चिल्लाने की इच्छा हो रही है, बट पता है क्या हो रहा है? बाजू वाले के बारे में सोच रहे हैं, क्या बोलेगा? अरे भाई, जब मन में हो विश्वास तो हर डर है बकवास. ये सुनो, ये सुनो. जब मन में हो विश्वास हर डर है बकवास. Now, जो मैंने बुक लिखी ये मैं 5 साल पहले लिख देती थी, बट मैं बहुत डरती थी. I used to think, क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, MS धोनी परमिशन देगा तो नहीं, या क्या होगा, एक लड़की क्रिकेट पे बुक लिख रही है, कौन उसको छापेगा. I used to think that. Guys, I just want to tell you one thing. अगर आप लोगों को भी लगता है कि you have a special dream and you think that it is capable enough, you think that you are capable enough to achieve it, no matter घर वाले क्या बोले, ये सोसाइटी क्या बोले, it doesn't matter यार. Just follow your instinct, guys, like what I did. And number 2, what stops us is overthinking. How many of you are victim of this? Overthinking. We think a lot. क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा. लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, what should I wear, if I look good, if I'll not look good. And this is the number 2 problem which I have seen in people. एक स्टोरी छोटी सी बताना चाहूँगी. मैंने नेशनल लेवल पे चेस रिप्रेजेंट किया है एंड एवरी टाइम आई यूज्ड टू गेट प्राइज, बट आई नेवर वेंट ऑन स्टेज, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जब स्टेज से चढ़ूंगी अगर मैं गिर गई तो क्या होगा. तो कितने लोगों को ये डर लगता है आज भी. पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट सबसे बड़ा डर है आज का. नाउ जब भी डर लगे, स्टॉप थिंकिंग एंड टेक स्टेप फॉरवर्ड. गाइस, यू विल सी दैट रिजल्ट्स विल कम. ऐसे नहीं होता कि MS धोनी को जब वो ग्राउंड पे जाता है डर नहीं लगता. डर सबको लगता है, बट दे टेक स्टेप फॉरवर्ड्स, नॉट बैकवर्ड. दिस इज द मेजर डिफरेंस I have seen in people like Dhoni or in people like Sachin or people like Saurav Ganguly, that these people face their fears. They go ahead and take that step. We have limited time. I'm just going to close my speech with a small poem which I love basically. और ये poem उन लोगों के लिए है, for people who want to do something really really big in their lives. जो लोग सोचते हैं कि मैं केपेबल नहीं हूँ, जो लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी नहीं होती, यू हैव टू क्रिएट इट. नाउ दिस पोएम सेज, if you have something bad enough to go out and fight for, to work day and night for, to give up your time, your peace, your sleep for, if all that you dream and you scheme is about it, and life seems useless and worthless without it, and if you gladly sweat for it, fret for it and plan for, and lose all the terror of opposition and God for, if you move towards that thing with all of your capacity, strength and sagacity, faith, hope and confidence turn pertinacity, if neither cold nor poverty nor sickness nor pain of body and brain can keep you away from the thing that you want, if dogged and grieved it, you besiege and beset it, and with the help of God, you will get it.
God bless you all. God bless Jito. And Jito is an excellent platform, guys. Please utilize it. Thank you, Jito, for giving me the platform to come and speak here. I end my speech. Thank you, guys. Thank you so much.